Hi everyone, how are you? Welcome to our RANA SIR educational channel. Today I will talk on a topic whose name is power, that is called in Hindi Shakti. So on this topic I have to explain in detail, so you on this topic concentrate from starting to end to develop good knowledge on this topic. That is, in other words, we can say that you concentrate on this topic from starting to end to update or develop or improve your knowledge regarding to power. What is the concept of power in physics? So you have to take its concept in detail. Therefore, you concentrate here. Now simultaneously you also like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also update their knowledge on this topic. Simultaneously you subscribe this educational channel more and more. Now here one additional information I am going to tell you and you have to follow it extremely positive. That is positive, and also you have to take its advantage in your future. So first of all you have to take one notebook and then one pen, and then you have to sit at your location properly, positively and safely to write all data which are available on the blackboard and also those informations which are spoken by me. So positively I am going to explain the concept of power, and then I will also utilize its concept in numerical. So you concentrate here to understand each and every concept of power and how its application will be done in the numerical. Okay, so what is the concept of power? So concept of power I am talking regarding physics. Physics means Vigyan. So in the case of physics I will define here the concept of power. In other words, that is in Hindi language, that is called Shakti. Okay, so power is the rate. So here I will write its definition will be as power is the rate at which the work is done, at which the work is done, that is called power. And it is also denoted by, it is also denoted by capital P, and its formula is given as P is equal to W divided by T. This is the formula of power in physics. So P, which is equal to W divided by T, and its unit will be watt. Its unit is watt, and also its other unit will be joule per second. Now work is calculated in joule and time is also calculated in seconds. So its unit will be joule per second. Okay student, one information I am also going to tell you. Other unit I can write 10 to the power 7 erg divided by second. 10 to the power 7 erg divided by second, because joule I can write in MKS system. So I already explained about the concept of work, that is force into displacement, and the unit of work will be joule, and other unit of that work will be Newton into meter. Because before, when I was defining the concept of work, that is multiplication of force into
displacement F into S. Now the unit of F is Newton and unit of displacement is meter, so Newton meter. So in other words, we can say that 1 Newton, which is equal to 10 to the power 7 erg. So its unit I can write Newton meter or joule. So 1 joule, which is equal to 10 to the power 7 erg. Now here second is available, so I have put there second. So the unit of power is watt or joule second or 10 to the power 7 erg divided by second. So we have to follow it positively. This is in CS system and this is also in MKS system. And what is SI unit? Okay, so you have to take its meaning positively. Okay, now I have already explained the concept of power, that is Shakti, that is available in physics, and in physics power is defined as like this. Power is the rate, means change in work done by time. The power is the rate at which work is done, which I have at which this per at which here I will write properly at power is rate. Yeah, power is the rate at which power is the rate at which, means power is rate जिस पर वर्क इज डन, कार्य किया जाता है, that is yeah, it is also denoted by P, and P is equal to W divided by T, and its unit I have written here watt. This is SI unit of power. Now its other unit is available also, joule per second, because joule per second is called watt, and it is also changed in series system. So in 1 joule, which is equal to 10 to the power 7 erg, divided by second is available, so I have used here per second. Okay, this is the formula of power, and each and every student has to remember it positively. Okay, now all these informations I will also translate into Hindi, so students who are reading in Hindi medium, those students can also understand its concept in detail. Okay, now first of all I am going to translate all these informations into Hindi. So this power, yeah, this Shakti is defined with respect to physics. Okay, physics means भौतिक विज्ञान. ओके, यहाँ पर पावर को यहाँ पर लिया गया है. पावर का हिंदी होता है शक्ति, और शक्ति को परिभाषित किया जाता है अगर कोई भी कार्य किया जाता है, जब किसी कार्य को किया जाता है पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या करते हैं, शक्ति करते हैं. शक्ति पावर को हम शक्ति करते हैं. जब किसी भी कार्य को जो होता है हम पर यूनिट टाइम में कंप्लीट करते हैं, तो उससे जो हमें आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को हम शक्ति करते हैं या उसको हम पावर करते हैं. इस पावर को जो होता है हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और इस पावर का सूत्र होता है P बराबर W/T. यहाँ पर W जो होता है वर्क होता है, T जो होता है सेकेंड होता है, इसलिए इसका यूनिट हम देखेंगे तो यूनिट जो होता है वाट होता है. हम वर्क बटे टाइम W/T, W को हम जूल पर सेकेंड भी कर सकते हैं. जूल पर सेकेंड को हम SI यूनिट वाट के नाम से हम जानते हैं. अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक जूल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है और डिवाइडेड बाय सेकेंड है. तो यह जो होता है हमारा MKS सिस्टम है. ये जो यूनिट एक्सप्लेन किया गया यूनिट का हिंदी होता मात्रक, ये जो होता है MKS सिस्टम है. MKS सिस्टम है, और ये जो होता है एक्सप्लेन किया जाता है SI सिस्टम. SI सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय
पद्धत, इसको अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धत कहेंगे, इसको मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहेंगे, इसको एमकेएस सिस्टम के नाम से जानेंगे, और इसको जो होता है हम सीजीएस सिस्टम के नाम से जानेंगे, सीजीएस सिस्टम, इसको हम सीजीएस सिस्टम के नाम से जानेंगे। तो सीजीएस सिस्टम को हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम को कहेंगे। तो हमारा P बराबर W/T, अगर सपोज कीजिए तो हमारा W जो होता है, वर्क जो होता है सीजीएस सिस्टम में दिया गया, और टाइम जो होता है हमको एमकेएस सिस्टम, दैट इज वो भी सीजीएस सिस्टम सेकेंड में ही रहेगा। तो कुछ डाटा अगर किसी दूसरे फॉर्म में रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर P जो होता है, शक्ति जो होता है, W/T है। तो अब इस शक्ति का फार्मूला P बराबर W/T है, मीन्स ये पावर P एग्जिस्ट होता है पावर, यहाँ पर P में, ये पावर में जो P टर्म है, इसी टर्म को यहाँ पे यूज किया गया, P बराबर W/T। W जो होता है वर्क डन होता है। तो अगर हम इस वर्क डन को हम एक्सप्लेन करेंगे किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये DW, इसको हम लिखेंगे, इसको पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लिखेंगे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा W डिवाइडेड बाई डेल्टा T होगा। जब इसको लिमिट को रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा को हम चेंज करेंगे D की फॉर्म में, तो ये हो गया DW डिवाइडेड बाई DT। इसका मीनिंग यह हो गया P इज इक्वल टू जो होता है DW/DT। ये छोटे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, ये डेल्टा T जो होता है टाइम ऑफ इंटरवल, ये छोटे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होता है। इसलिए जब हम लिमिट साइन को रिप्लेस करेंगे तो ये डेल्टा जो होता है स्मॉल d में चेंज हो जाएगा, और इसलिए DW/DT लिखेंगे। तो ऑलरेडी व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन, एट दैट टाइम इफ एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग along the horizontal axis, in that case there is angle will be 0, so cos 0 which is equal to 0, cos 0 which is equal to 0, already I have explained the concept when I was explaining the concept of work, and that time I have explained. So if any object which is moving forward, that is horizontally, suppose that here I have taken one object, this is one object, and on this object I have applied one force, and this force is moving horizontally on the horizontal path. So in this case I will say work done will be W is equal to F into S, means this is the product of force into displacement. Product of force into displacement, I will say that is the S. Suppose that after some time that object has reached at point B. So this is the point B and this is the point A. So between the point A and B, I have considered here a displacement. That displacement is S. That displacement is S. So I have written here, I have taken one object and on that object I have applied one force. Due to this force, that object is moving on the horizontal plane. So from the point A, here this is the point A. From the point A, it is going to the point B, and the distance between displacement between from the point A and B is S. So work done will be as W, which is equal to F into S, because here Fs cos theta. If object will move along the horizontal axis, so angle will be 0, so cos 0 which is equal to 1. So I will multiply this term with 1, so I will get same. If any value which is multiplied with 1, so I will get the same value. So value is here F into S into 1, that is F into S. Okay, so that concept I will use here. In the place of W, I can put from here W is equal to F into S. Okay, student, so you concentrate here. I am going to explain its meaning in detail.
So d upon dt in the bracket, I have to put the value of w, which is equal to f into s. Now here one geometrical meaning is that each and every student has to know here, if any force which is applied on a body, so that force will be constant. So differentiation of constant is, I will take from the operator outside, and then I will differentiate only the value which is variable. So f is constant, so I will take f out from this operator d upon dt. So after using, so I can put here, so above information I am going to erase because each and every persons are knowing it. So here I will say, so d upon dt, here f is constant, so I will take out from this operator d upon dt. So I will write f outside of it, and then I will write d upon dt, and in the bracket I have to write dt, ds upon dt. So ds upon dt, that is also known as velocity. This is the velocity. What is the definition of velocity? That is the rate in change per unit time. That means, in other words, we can say that the velocity is also defined as total distance upon time, that is called velocity. So I can put here ds upon dt, that is the velocity. So here I will write f into v. So in the place of ds but dt, I can write v, because this is the formula of velocity. Formula of velocity is also known as displacement divided by time. So this ds is also displacement, that is the short displacement, and time is also taken that between point A and point B. So I will say this is the time, distance upon time, that is called velocity. So momentum p, this is not momentum, this is the power p, which is equal to f into v. So here I will say this is the p, which is equal to f into v. So f into v. So here I will say this is the scalar quantity, because this is also vector, and this is also, force is also vector quantity, and velocity is also vector quantity, but I have to take here dot product of force and into velocity. So I can write fv cos theta, fv cos theta. This is the scalar product. Okay, so each and every student has to remember this formula of this formula. So I have two formula. I have combined here two formula, and this is one. There is three formula. P is equal to w upon t, and here I have written p is equal to f into v, which is equal to fb cos theta. So here I am going to explain with the help of vector. Okay, already I have defined its concept. Now above informations I am going to erase, and after erasing I will explain its concept in detail. Okay, so you concentrate here to understand the concept of power. Now here I have to take two vector. One vector is a and other vector is b. So this is also separate vector, and this is also separate vector, but we have to take dot product of these two vectors. So I will get scalar quantity. So here will be magnitude of the vector a into magnitude of the vector b into cos theta, into cos theta. So here one vector is f and other vector is v. Now vector sign I have eliminated, because if I will write alphabet or any symbol boldly, so that is also the meaning of vector. So vector f and vector b. So according to this formula, I will write magnitude of the vector f and also magnitude of the vector b into cos theta. So in the place of a, I have written here f, and in the place of b, I have written here v. So after using this formula, I can write f b cos theta. Okay, student, if you have any doubt, so you type type your information
information in the comment section positively, and then you send. And when you will send, so I will receive your informations, and then I will analyze, that is I will study your query, and then I will give the appropriate solution of your query in detail. Okay student, so already I have defined here the concept of power. So power is the rate at which the work is done. That is, power is also denoted by P, that is P is equal to W divided by T, and its unit will be watt. And its other unit I can also write joule per second, but I will change into in CS system. This is in MK system, but I will change in it into MK CS system. So I will write here 10 to the power 7 erg. Okay, this is the 10 to the power 7 erg per second. Okay, now already I have defined here. So in the case of work is also written as Fs cos theta. If theta will be, if any object which is moving at angle, so in that case I have to write here Fs cos theta. But here value of theta, if object is moving along the horizontal axis, horizontal direction, so angle will be 0, so cos theta will be 0. So value of cos theta, value of cos 0 degree, which is equal to 1. So in this case I will put cos 0 which is equal to 1. So W is equal to Fs cos theta cos 0 1. So after multiplication I will get W is equal to F into S. Okay, because this object moving from point A to point B, and also displacement is available from the point A to B is S. Okay, so for a short interval of time, that is a particular interval of time, I have taken a small w and a small t. So I have taken its limit value. So I will change its limit value. So this delta will change in d upon dw upon dt. Now we have to put the value of work done from here. In the place of w, I have to put F into S divided by dt. Now here force is constant. If on any object, if any force I will apply, so that force will have a fixed value. Therefore here F is constant, so I will take F outside from this operator d upon dt. So after writing and after segregating it, then I have written here d upon dt into S. So ds upon dt, this is the value of velocity, because distance upon time, that is called velocity. So I can write there Fv. So P is equal to Fv. P is the power Fv. Now here I have, this is the force and this is the velocity. Force is also a vector quantity, and V means velocity is also a vector quantity. If multiplication of two vector, I will get a scalar value. So here I have to put the magnitude of the vector A and also magnitude of the vector B into cos theta. Theta is the angle between these two vectors. Okay student, so we have to use this concept to write this term Fb cos theta. Okay, so each and every student has to remember this formula. P is equal to W upon T, and P is equal to Fb, and also Fb cos theta. According to requirement, you have to use the formula for getting the requirement of the question. Okay student, I hope that you are understanding all these informations in detail. Therefore, if you are understanding clearly, therefore you like this slide video, and also you share this slide video with your colleagues, friends and students, so that they can also improve their knowledge on this topic. And simultaneously you also subscribe this educational channel more and more. Okay student, if you have any doubt, any query, any confusion related to this topic, so you write your information in the comment section, and then you send. And after sending, I will properly read your information, and then I will give the appropriate solution of your question in detail. Okay student, now thank you for watching this live video. Now I will also derive another formula of power. You concentrate here how we will derive it. Okay, now
all the informations I will also explain in Hindi, so students who are reading in UP board are those students who are reading in UP Hindi medium, those students can understand this concept in detail. Okay student, now यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था कि शक्ति पावर, पावर का हिंदी होता है शक्ति। ये जितने भी टर्म एक्सप्लेन किए कर रहे हैं ये फिजिक्स के रिकॉर्डिंग जो होता है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया था कि अगर कोई भी शक्ति होता है, वो शक्ति जो होता है उस पर जो कार्य किया जाता है उसी को जिस टाइम ऑफ इंटरवल में काम करते हैं उसी टाइम ऑफ इंटरवल को ही हम क्या करते हैं, शक्ति कहेंगे। उस शक्ति को जो P बराबर W/T के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर W जो होता है वर्क होता है, T जो होता है टाइम होता है, लेकिन P/W/T को जो होता है हम पावर करते हैं और इसका यूनिट जो होता है वाट के नाम से जानते हैं। ये जो होता है SI यूनिट होता है और इसका दूसरा यूनिट जो होता है के सिस्टम में जूल पर सेकेंड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, सो जूल/सेकेंड भी हम लिख सकते हैं। और इसको जूल/सेकेंड को हम ऑलरेडी जूल को हम W को हम लिख सकते हैं F/S, ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है F/S। F का जो होता है न्यूटन होता है, इसका सेकेंड होता है। यहाँ पे S जो होता है सेकेंड नहीं है, S जो होता है डिस्प्लेसमेंट है, उसका मेजरमेंट जो होता है वो मीटर होगा, इसलिए न्यूटन मीटर बस सेकेंड होगा। लेकिन हम एक न्यूटन को ऑलरेडी हम चेंज करेंगे तो 10⁷ अर्ग होगा, यहाँ पर सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो पॉजिटिवली यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला एंड इट्स यूनिट आल्सो। यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। ओके, नाउ वी हैव टू डिराइव दिस फार्मूला। इसको डिराइव करने के लिए हम क्या किया है कि अगर हम जितने भी वर्क होते हैं, सपोज कीजिए कि इस एरिया में वर्क डन परफॉर्म किया गया है, इतने छोटे से एरिया में जो होता है वर्क डन परफॉर्म किया गया, तो इस वर्क डन को जो होता है हम DW से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगा है वो DT से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो DT से रिप्रेजेंट करें, हमारा टोटल वर्क किया है, लेकिन एक छोटा स्पेस लिए, उस स्पेस में हमने वर्क जो होता है छोटा वर्क किए DW हुआ, और उसमें जो टाइम इंटरवल लगा वो टाइम इंटरवल DT है। अब इसका लिमिट वैल्यू लेंगे, लिमिट वैल्यू लेने का मतलब है छोटे से छोटा कण हुआ, पार्टिकल होगा, इसका लिमिट वैल्यू। अब डेल्टा जो होता है वो चेंज हो जाता है D में, और D में चेंज करने के बाद से लिमिट को रिमूव करेंगे और dW/dt लिखेंगे। अब यहाँ पर W जो होता है, हम किसी वस्तु को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम ये शिफ्ट कर रहे हैं या किसी तरीके से उसको मूवमेंट कर रहे हैं या किसी तरीका का उस पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें फिक्स फोर्स वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये फोर्स जो होता है कांस्टेंट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग होता है वस्तु। इस वस्तु को बिंदु A पर रखा है और इस पर जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद से इसको बिंदु B पर शिफ्ट किए हैं। तो बिंदु A से बिंदु B के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी विस्थापन होता है, उस विस्थापन हुआ। तो इसमें कितना कार्य किया गया है, उस कार्य जो होता है उसमें जो फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स और उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही हम कार्य करते हैं। लेकिन यह प्रोसीजर जो होता है कब फॉलो होता है, लागू होता है, ये प्रोसीजर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होगा। लेकिन जब इसको जो होता है किसी एंगल पर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो उस केस में Fs cos थीटा हो जाएगा। वहां पर थीटा का वैल्यू जो होता है 0 से लेकर 360 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। लेकिन वही जब हम पार्टिकुलर केस में जब हम देखते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं तो वहां पर जो होता है थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू ऑलरेडी 1 होता है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो W = F × S मिलेगा। S जो होता है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के बाद से मैंने यहाँ पर लिखे, यहाँ पर F × S लिखे। उसके बाद से F एक कांस्टेंट होता है, तो d/dt एक ऑपरेटर होता है। उस ऑपरेटर से हम इस ऑपरेटर से जो होता है बाहर ले लेंगे, आउटसाइड ले लेंगे। उसके बाद से ds/dt लिखेंगे। ds जो होता है यह एक डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, एक छोटा विस्थापन होगा बट टाइम, एक छोटा टाइम है। तो डिस्टेंस बटे टाइम को हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर v लिखेंगे, इसलिए F × v
हो गया। इसलिए हम देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू एफ इंटू वी हो गया। यह भी फोर्स, एफ जो होता है फोर्स होता है, वी जो होता है वेलोसिटी होता है। इसका मीनिंग यह होता है कि एफ में भी डायरेक्शन होता है और वी में भी डायरेक्शन होता है। इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक फार्मूला को यहाँ पर लिखे हैं ताकि इससे आप इजीली समझ सकेंगे। ए भी एक वेक्टर है, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, आई वेक्टर आई कैप, वेक्टर जे कैप, वेक्टर के कैप। उसी तरीके से बी में भी वेक्टर आई कैप, वेक्टर जे कैप, वेक्टर के कैप होंगे। इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे और इस दोनों के बीच का एंगल जो होता है हम लेंगे कॉस थीटा के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई किए ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर 2 वेक्टर लिए, एक वेक्टर फोर्स में है, एक वेक्टर जो होता है वेलोसिटी में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एफ भी कॉस थीटा होगा। इस फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 फार्मूला। 1, this is 2, this is 2, and also this one and this one, that is 3. So you have to remember all these formula. Now you concentrate here. I am also going to derive another formula that is also important, that is very very important. So you have to concentrate here to know that formula positively. Okay, so I am going to erase here this information. Okay, so this formula, that is I have to write here P, which is equal to W upon T. Okay, P is equal to W upon T. I have to write here. Okay, now here I will say according to the potential, if any object which is here, I have to write that information clear. If any object which is available at infinity and that is the plus positive Q charge. Now that object is coming at a fixed point and I will perform a work. So that work is also known as potential, that is potential V. V is equal to W divided by Q. We have to write that formula, that is V is equal to W by Q. If any object which is available at infinity and that has a positive Q charge and that object is coming at a fixed point and during that time of interval I have to do a work, and that work can be written as V is equal to W upon Q. So from this formula I can write in the place of W, that is V into Q. Okay, I have to write here. So in the place of W I will write here V into Q. So V into Q I have to write, and below each T is available. Okay, so according to this is the power P is equal to V into Q divided by T. Okay, now further I will these informations I am going to erase. Okay, only formula I will keep because that is necessary to remember. So here I will write P, which is equal to W divided by T, its unit is watt. So each and every student has to remember it positively. Now, and this formula I will also save here, P, which is equal to FV or FV cos theta. So each and every student has to remember this formula also. Now I am going to erase it. Now due to electricity I can put here Q is equal to I into T. Here Q is the charge, I is the current, and T is the time. So in the place of Q I can also write I into T. So here I will put V into, in the place of Q I have to write I into T divided by T is also available. So I will cancel out T. So after cancelling I will write V into I. So that power is also written as
P is equal to V into I. This is very important formula, because some question can be asked on this formula. Voltage will be given, current will be given, so what will be the power in the wire? So you have to write it properly. So this is the concept of electricity, and that electricity I have already summarized here in the concept of power, that is Shakti, that is P is equal to W by T. According to this way, I have to remember 6, 5, 2, 3 and 4 formulas. That is P, which is equal to V into I. So you have to also remember this formula. This is very important, and you have to take its application in the numerical. Okay, students, I hope that the concept of power already I have interpreted with you in detail, and each and every concept I have described with you in detail regarding to power, that is Shakti. Okay, student, so all these informations I will also explain in Hindi, so student who are reading in Hindi medium, those students can also understand its concept in detail. Okay, now here there is a field. यहाँ पे एक कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक Q चार्ज जो होता है, एक Q को इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में इसको चार्ज कहेंगे, हिंदी में इसको आवेश कहेंगे। अगर प्लस Q आवेश को अनंत पर अगर रखा गया है, और अनंत से जो होता है हमें किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर, किसी फिक्स पॉइंट पर उसको लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। जब किसी चार्ज को अनंत से हमको लाने में किसी बिंदु पर जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को जो होता है हम वैद्युत विभव करते हैं। वैद्युत विभव को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और V जो होता है W/Q होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू Q। ओके, अब हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत में या विद्युत जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी और हिंदी में विद्युत कहेंगे, उस चैप्टर में जो ए आवेश है Q, वो आवेश को हम लिखते हैं, वो आवेश जो होता है मल्टीप्लीकेशन होता है करंट और टाइम के। जिस अगर उस आवेश जो होता है किसी परिपथ में आवेश का फ्लो होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि उस आवेश में, उस परिपथ में जो करंट फ्लो होता है जितने टाइम ऑफ इंटरवल में, तो उस करंट और उस टाइम का जो प्रोडक्ट को ही हम क्या करते हैं, आवेश कहते हैं। तो इस वैल्यू Q बराबर IT है, उसको Q के प्लेस पर I इंटू T रखेंगे। तो यह पावर के जो ये पावर के लिए जो फार्मूला दिया गया P बराबर W/T, तो इस W की जगह पर एक Q इंटू V रखेंगे, और फिर से Q की जगह पर I इंटू T रखेंगे। तो नीचे डिनोमिनेटर में भी T है और न्यूमरेटर में भी T होता है, एक कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड में पावर P लिखेंगे और राइट हैंड साइड में V इंटू I लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो फार्मूला ऑफ पावर, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, बिकॉज सम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस, बिकॉज वी हैव टू find the voltage of the circuit and also current of the circuit. So multiplication of voltage and current is the power, and its unit is also I have written there watt. Okay, yeah, joule per second. So you have to follow same information. Okay, students, I hope that you are understanding the concept of power in detail. Therefore you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update, that is improve their knowledge on this topic. Okay, if you have any doubt, so you write or type your information in the comment section positively regarding this topic, and then you send, and after sending I will analyze, that is study your information, that is query in detail, and then I will give the appropriate solution positively. Okay, students, so you have to follow it, all informations positively. Now the application of power I will use in the numerical, so you will understand how these formulas, how this formula can be used in the numerical. Okay, formula is the singular noun, but formula is the plural noun. So here there are many formula of the power, so therefore I am saying formula can be used in the numericals. So you concentrate here. I am going to write one numerical, and then I will use the application of this power in
numerical to calculate its requirement, that is its value. Okay student, so positively I am going to erase all these informations, and after erasing I will write numerical and then I will give the appropriate solution of the requirement of the question by using the concept power. Okay student, so positively I am going to erase it, and after erasing, first of all I will write its numerical and then I will utilize its concept. Okay student, so you concentrate here. Now here I am going to write numerical number 1. So here I am saying there is a person, there is a person going to roof of the building by using stair. The height of the building is the height of the building is 35 meter, and that person has weight 25 kg on his head. Find the power of that person. Okay, so here I have written one question. Now one person which is moving, which is going on the roof of the building. The height of the building already given here 35 meter, but that person has weight 25 kg on his head. 25 kg on his head. So we have to also get power, and that person takes 5 minutes. 5 minutes or 5 seconds. 5 second time to reach on the roof. Okay, so that person is taking only 5 second time to reach on the roof of the building. So we have to calculate power. So each and every students are knowing about the concept of power. First of all, here I will write solution, and appropriately I am going to write here one stair. So one stair will be like this. So this is the height of the building. Here I am saying this is the height of the building. So height of the building, suppose that here I am saying its height is 35 meter from the ground. Now this is the stair. Okay, now a person which has standard with
25 kg mass. So here I will put one person like this. One person I can put here that is moving along the stair. Here I will say I can draw a person like this. Okay, so I can say like this. It has also hand, finger. I can draw. This is art. Okay, now this is the person. He has two legs, both, that is standard here. Now here that person has weight on his head. Okay, this is the object, and this object has weight how much? That is given here 25 kg. 25 kg. That is written, that I have shown here. This is the mass that that person has taken 25 kg mass, and with this stair he is going on the roof of the building. Okay, now its height is 35 meter. Okay, its height is 35 meter. So we have to find work done. We have to find the power of this man. We have to find the power of this man. So first of all, I have to write solution. So according to question, I will write here according to question. According to question, I have to write here P is equal to W divided by T. Time is also given here 5 seconds. Time is also given here 5 seconds. Okay, so we have to calculate power. So here I have already explained a day before yesterday about the concept of energy. Yesterday I have already explained with him. I have also explained with you about the concept of energy. So energy is also defined by Albert Einstein, that is E is equal to mc square. So after explanation, Albert Einstein told one statement. That statement was like this: energy cannot be created, cannot be destroyed, only converted from one form to another form. It means that I have authority only convert from one form to another form, but there is no need to generate, or we cannot destroy the energy. Okay, so energy can be divided into two parts. One is the kinetic energy and other is the potential energy. If any object which has movement inside it, so there will be kinetic energy, but this object is at rest, that is available on the head of the person, that is at rest, only movement of the person is available. So that object is going from bottom to the top of the roof, and from the bottom to the top of the roof, its height is 35 meter. 35 meter, it means that here this object will have only potential energy. So potential energy has formula mgh, and kinetic energy has formula 1 by 2 mv square. So here potential energy I have to calculate, and after calculating potential energy, and then I will substitute potential energy in the place of W, and potential energy in the place of W is also known as work. Okay, so after substituting here the potential energy, and then I will divide that potential energy with time interval, that is given 5 seconds. So I will get a value, and that value will be the power of the person. Okay, and that has unit watt. Okay, student, or in other words we can say that joule per second. So we have to follow this way to calculate the power of the person. Okay, student, so above written question I will erase, and after erasing I will give its appropriate solution. Okay, you concentrate here. I am going to give its solution here. So first of all, I have to erase written data, and then
I will give its solution. So here I have drawn here a stair. On this stair, person is going from bottom to top of the building, and height of the building is 35 meter. Okay, so here will be potential energy. So according to diagram, ACCORDING, according to diagram, I have to write potential energy. Potential potential energy. Potential energy, ENERG, potential energy. It is written with U. I will use symbol U, which is equal to M into G into H. So here M is the mass of the object and G is the gravity. And its value I have to take here 10 meter per second square. And H is the height of the building, that is from bottom to top is 35 meter. I have to put here, and this potential energy can be written as W. Okay, so I have to calculate the value of U. So value of U, here I have to write mgh. So here I will substitute the value of M, that is 25 kg, into G I have to write here 10, and the value of H is already available 35 meter. So I will get a value, and that value is available in joule. Okay, so according to in question I can write W is equal to U, and which is equal to, I have to multiply, that is 250 into 35 joule I have to write here. Okay, now according to question I have to calculate the power. I know power P is equal to W by T. So value of W I have got here, and then T is also given in the numerical, that is 5 seconds. So I will use here. So here I know, yeah, we can write, we know that one information, that is power P, which is equal to W divided by T. So value of W I have to put here 250 into 35 divided by the value of T that is available in the question 5. So here I will simplify, 5 on the 5, 5 7 the 35. So here I will write 250 into 7. So I will multiply it. After multiplication I can write here 0 5 7 5 is 35, 5 carry will be 3, 7 2 is 14, 14 up plus 3, 17. So I can write its unit is joule. Okay, so finally I can write here P, which is equal to 1750 joule per second. Here I will write joule per second. Okay, so here I can write positively joule per second. Okay, power is, I have calculated joule per second, or in other words we can write watt, WATT, watt I can write. So this is the final answer of this question. Okay student, I hope that you are understanding the question and also its solution positively. Okay, if you have any doubt, so you write your doubt point in the comment section positively, and then you send. After sending, I will
study your query, and then I will give the appropriate solution of your question in detail. And if you are understanding all informations clearly, therefore you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update, that is improve their knowledge on this topic. Okay, and also simultaneously you subscribe this educational channel more and more. Okay student, now all these informations I will also translate into Hindi, so student who are reading in Hindi medium or student who are reading in UP board, those students can understand its concept, its क्वेश्चन एंड ऑल्सो इस सॉल्यूशन इन डिटेल. ओके स्टूडेंट, नाउ इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक पर्सन है, वो पर्सन जो होता है एक सीढ़ी के थ्रू जो होता है वो छत पर पहुंच रहा है, लेकिन वो छत पर पहुंच रहा है, एक बिल्डिंग के छत पर पहुंच रहा है. उस बिल्डिंग की हाइट जो होता है 35 मीटर है, लेकिन जब वो पर्सन जो होता है नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक वेट, एक भार, द्रव्यमान, मास लेके जा रहा है. वो वेट जो होता है, वो मास जो होता है कितने केजी का है? 25 केजी का है. ऑलरेडी जो होता है इसको अपने हेड पर रख कर वो चढ़ रहा है. उस केस में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, लेकिन किसी सिचुएशन में वो किसी पोजीशन पर होता है, तो उस केस में जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है. पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में जो होता है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं. हम जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था कि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट का जो प्रकाश के लाइट के चाल जो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं, वह एक कांस्टेंट होता है. इसका मीनिंग यह होता है, इसको ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हमारे पास अथॉरिटी होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का. तो इसमें देखते हैं कि किसी वस्तु का एनर्जी हम 2 फॉर्म में डिफाइन करते हैं. एक तो होता है अगर वस्तु में जो होता है मूवमेंट है, गति है, तो उसमें हम गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टैटिक क्लास में, ये ड्यूटी स्टैटिक क्लास में भी, वो उसका वैल्यू जो होता है 1/2 mv² होता है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो होता है किसी सिचुएशन की वजह से वो किसी हाइट पर होता है, उस केस में जो होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो हिंदी में जो होता है स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जिसको mgs रिप्रेजेंट करते हैं, और उस स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं. अब उस स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उस पर्सन के पास, उस व्यक्ति के पास कितना शक्ति है कि वह अपने शक्ति से जो होता है उस वस्तु को जो होता है नीचे से लेकर बिल्डिंग के छत पर पहुंच गया. उसका शक्ति क्या? उस शक्ति को कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं जो शक्ति के लिए फार्मूला होता है P = W/T. तो इसमें जो पर्सन वर्क कर रहा है, तो वो वर्क जो होता है पोजीशन, माने वहां पर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कौन सा है? स्थितिज ऊर्जा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी है. उस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए mgs से कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द फार्मूला एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट राइटली, बिकॉज mg ये तो ग्रेविटी के वजह से नीचे भार लगेगा, लेकिन उसका मूवमेंट जो होता है कितना हुआ है? h मीटर हाइट. तो वो h मीटर हाइट क्या है? 25 मीटर. इसको मल्टीप्लाई करके हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया. वो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है, इसलिए वहां पर वर्क के वैल्यू लिखे. इसलिए हमने वर्क पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किए, वो वर्क के बराबर हो गया, वो वर्क में रखे. लेकिन वो पर्सन जो होता है जो उस बिल्डिंग के ग्राउंड सरफेस से उस बिल्डिंग के जो होता है रूफ सरफेस पर, टॉप सरफेस पर पहुंचने में जो टाइम लगा है, वो पर्सन ने जो कितने सेकंड ले रहा है? 5 सेकंड. तो 5 सेकंड से उसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो वाट होगा या जूल पर सेकेंड होता है. तो यह उस व्यक्ति का पावर होता है, शक्ति होता है, जिस शक्ति से जो होता है उस ऑब्जेक्ट को जो होता है ग्राउंड सरफेस से उस बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचाया है. ओके स्टूडेंट, आई होप दैट ऑल इंफॉर्मेशन आप क्लियरली समझ गए होंगे. इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट पर इंप्रूव हो सके. इंप्रूव का मीनिंग ये होता है अपडेट और डेवलप हो सके. और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें
और इसमें जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आया उस पॉइंट पर कमेंट लिखें, टाइप करें और उस टाइप करने के बाद से सेंड करें। हम उसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद से उसका एप्रोप्रिएट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिवली। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लाइव वीडियो एंड आई विल मीट यू on the next day tomorrow on the same time, that is 30 minutes past to 7 o'clock to 30 minutes past to 8 o'clock. Okay student, so this is the physics of the class 11th and you have to read it clearly. This is important. Okay student, these chapters are also available in the class 9th English medium, so you have to English medium and also in Hindi medium, so you have to read it properly, and its application you have to also do in your real life. Okay, so these are the important concept and you have to read properly. Okay, thank you for watching this live video. I will meet with you on the next day on the same time. Thank you for watching. Jai Hind, Rana sir.